very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and revised your previous chapter. Today, we are going to start a chapter 7, which is food spoilage एंड शॉर्टेज. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फूड स्पॉइलेज के बारे में एंड फूड शॉर्टेज के बारे में इन डिटेल. So without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is food spoilage and shortage, and the topics which we will discuss are taste, appearance and smell of spoiled food, factors causing food spoilage, storage and preservation of food, shortage of food, poverty and malnutrition. Now, the food gets spoiled when it is not packed properly or is stored in unsuitable surroundings. हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है अगर हम उसको अच्छे से प्रॉपरली पैक नहीं करके रखेंगे या फिर हम उसको अनसुटेबल सराउंडिंग्स में रखेंगे तो. इट ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर. फूड एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है इन द फूड. दिस मेक्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स जैसे बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ग्रोन ऑन इट. नाउ टेस्ट, अपीयरेंस एंड स्मेल ऑफ स्पॉइल्ड फूड. कुछ कॉमन साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कुछ ऐसे चेंजेस से कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है. बिकॉज ऑफ इट्स कलर बिकम स्टिकी एंड गिविंग आउट अ बैड स्मेल. फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड बिकम स्टिकी, स्लिमी एंड स्मेली, वाइल जो हमारे वाइट, येलो, ग्रे और ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाते हैं ऑन द फूड. The appearance and smell of food tells us that it is spoiled and should not be eaten. But still, if anyone eats such food, it taste makes them to spit out at once. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज, यानी कि हम अपनी नॉर्मल आइज से उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते. स्पॉइल्ड फूड कंटेन करता है कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो सिकनेस कॉज कर सकते हैं. फ्लू, diarrhea, skin diseases, vomiting, stomach ache, and headache are some diseases that can be caused by eating spoiled food. Once a person falls sick and eating spoiled food, she is said to suffer from food poisoning. यानी कि अगर कोई गंदा खाना खाने से, स्पॉइल्ड खाना खाने से बीमार हो जाता है तो या उसको कोई डिजीज हो जाती है तो उसको बोला जाता है फूड पॉइजनिंग. Now, however, not all microorganisms are harmful. Some of them are good also. जैसे good microorganisms help करते हैं making of curd, cheese, fermented batters for many recipes like idli and dosa. Do you know bad microorganisms जो sickness cause करते हैं उनको germs बोला जाता है. It is your activity which says why does the food get spoiled faster in summer than in winter? Discuss in class. तो हमें ये डिस्कस करना है कि जो फूड है वो समर में क्यों जल्दी स्पॉइल हो जाता है rather than in winters. So यहाँ पे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से समर्स में फूड जल्दी स्पॉइल हो जाता है देन इन विंटर्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा खाना खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर इंक्रीज्ड मॉइस्चर. नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन और टेस्टेड फूड दैट इज स्पॉइल्ड? इफ यस तो यस, इफ नो सो नो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स कॉजिंग फूड स्पॉइलेज. ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से फूड स्पॉइलेज होती है. द स्पॉइलेज ऑफ फूड डिपेंड्स करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे एंड द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स आर. सबसे पहला होता है मॉइस्चर. इट लेट्स माइक्रोब्स टू ग्रो. सो इफ जो बिस्किट्स होते हैं, ब्रेड या केक्स होते हैं, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और खराब हो जाते हैं. टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर के अंदर जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है. इफ मिल्क इज ट्रीटेड वेरी कोल्ड टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स फैट कंटेंट गेट सेपरेटेड. अगर हम मिल्क को बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए उसको ठंडे टेम्परेचर में रख देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी फैट होता है, कंटेंट होता है, वो सेपरेट हो जाएगा. स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. तो हम क्या करते हैं, हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग वेरिएट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है, इजी कर देता है टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लेटिंग इट टू गेट स्पॉइल्ड. जैसे सबसे पहले आता है ड्राइंग. तो ड्राइंग इज यूज टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन फूड बाय ड्राइंग इन द सन. सिंस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर, द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है बाय ड्राइंग. फूड को ड्राई करने से यूजिंग ड्राइंग मशीन्स, skimmed milk, soup powders and meat powders are dehydrated food items. Potato chips are made from raw potatoes that are peeled, chopped and dried. Fruits and vegetables such as raisins, dates, figs and peas are dried to preserve them for a long time. Now, freezing.
एट लो टेम्परेचर जो माइक्रोब्स होते हैं दे ग्रो एट अ स्ट्रॉन्गर रेट, तो हेंस जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश या मीट होता है उसको मोस्टली प्रिजर्व किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज ताकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए रहे. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Next is an activity which says give two examples of food items that can be preserved by. तो जैसे ड्राइंग से कौन कौन से फूड आइटम्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सॉल्टिंग से, फ्रीजिंग से, जैसे हमने पढ़ा फ्रीजिंग से फिश, मीट, ठीक है, स्वीटनिंग से. तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं कि इन सब टेक्निक से हम किन किन फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. पिकलिंग. पिकलिंग क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे मैंगो, चिली, कैरेट आर सॉल्टेड एंड पुट इन विनेगर और इनफ मस्टर्ड ऑयल टू मेक पिकल्स. इट अलाउज डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग. तो स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग से क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं विद शुगर व्हेन मेड इनटू जैम्स, जेलीज एंड चटनीज. फ्रूट्स सच एज pears, peaches, apples, mangoes and apricots are also preserved in sugar syrup. The growth of microbes जो है वो स्टॉप हो जाएगी अगर हम उसमें सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर देंगे फूड के अंदर. वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मटन्स आर ट्रीटेड विद ड्राई सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशंस टू लास्ट लॉन्गर. Do you know heating is another method of making food germ free? Water and milk are boiled to kill germs. Now adding preservatives. कभी कभी हमें कुछ केमिकल्स ऐड करने होते हैं टू इन द फूड आइटम्स टू प्रिजर्व देम, जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. ये प्रिवेंट करते हैं फूड को ताकि वो स्पॉइल ना हो. वी यूज देम टू प्रिजर्व थिंग्स जैसे जैम, सॉसेस, क्वेशीज एटसेट्रा. नाउ स्टोरेज ऑफ फूड. तो फूड बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए. आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स आवर बॉडी नीड्स फूड टू वर्क. People eat various kinds of food every day, and at the same time there are many people do not get enough food to eat. तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक प्रॉपर मील इन अ डे. सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर. नाउ कॉन्टिन्यूड पुअर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करता है बॉडी फंक्शनिंग को और माल न्यूट्रिशन को लीड करता है. माल न्यूट्रिशन एक डेफिशिएंसी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते जितने हमारी बॉडी को चाहिए टू फंक्शन. And it can cause various health issues जैसे diseases such as kwashiorkor, marasmus and anemia. Next is poverty and malnutrition. Poverty और malnutrition क्या होता है, मेन कॉज ऑफ malnutrition है poverty. यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो ज्यादा अर्न नहीं कर पाते, तो वो एबल नहीं होते कि वो सफिशिएंट फूड अपने लिए खरीद सके. बड़ी बड़ी फैमिलीज में स्मॉल अर्निंग्स हो रही होती है, ऑफन कंप्रोमाइज करते हैं बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड के लिए. दे कैन नॉट बाय फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स फॉर ऑल द मेंबर्स. वो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर मिल्क एक अच्छी क्वांटिटी में अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं ले पाते. एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, so they suffer from malnutrition. It is your grocery which may first mold means to make something into a particular shape or form, pressing it or by putting it into a mold. Spoiled means to change something good into something bad, useless, unpleasant. Dehydrate means to remove all the water from something. Let's review the chapter. Foods and cooked food become sticky, slimy and smelly. We cannot see microorganisms within naked eyes, and we can prevent food from getting spoiled by preserving it. Moisture is removed by drying. At low temperatures, microbes grow at a slower rate. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Very cold and very hot temperature dash food spoil. Moisture can be removed by drying. Dash are preserved with sugar and made into jams and jellies. Fruits. We cannot see dash with the naked eyes, microorganism. Dash is used to reduce the water content in the body by drying it in the sun. Drying. Next is fill in the blanks. Dash are cooked food become sticky, slimy and smelly. So it is fruits. The good dash help in the making of curd and cheese, microorganisms. Dash lets the microbes to grow, moisture. Dash of microbes can be stopped, growth. If the milk is treated to very cold
temperatures for a long time, its fat content gets separated. Next is true false. We should not eat spoiled food. True. Food is not necessary for all living beings. False. All microorganisms are harmful. False. Fruits are preserved in salt syrup. False. So students, this was your complete chapter about food spoilage and shortage. I hope it is clear to you. Do revise and learn the exercise of the chapter. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.